Okay, so we revising that how to find out the element from the largest element from the array. So first step to initialize, second step to increment, third step to test the condition. Then after that write the location refers to item found. If the item not found, then compare the element and again repeat the step till item not found. ठीक है बाबा. लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करण लाइ सब खां पहिरीं असां छा कंदासीं, इनिशियलाइज़ कंदासीं, असां टेस्ट कंदासीं, देन असां कंपेयर कंदासीं, अपडेट कंदासीं. अगरि आइटम नथो मिले देन असां छा कंदासीं, दोबारा लोकेशन रिपीट थींदो स्टेप ऐं प्रोसेस. दोबारा वापसि असां इंक्रीमेंट में ईंदासीं, सॉरी टेस्टिंग में ईंदासीं कि इंक्रीमेंट में ईंदासीं, इंक्रीमेंट खां पोइ टेस्टिंग में ईंदासीं, दोबारा टेस्ट प्रोसेस टिल जेसि ताईं आइटम नथो मिली वञे तेसि ताईं इहो प्रोसेस हलंदो रहंदो. ठीकु आहे. ऐं इहो फ्लो चार्ट आहे जेके फॉलो कंदासीं असां त कमु थी वेंदो. ओके, न्यू टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, sequential flow, logic flow, then conditional logic or selection logic, then iteration logic or repetition logic. ये तव्हां पढ़िया आहियो पहिरीं खां कि सीक्वेंस और सीक्वेंशियल लॉजिक चवंदा आहियूं असां खे, कंडीशनल लॉजिक या सिलेक्शन लॉजिक चवंदा आहियूं, थर्ड इज आइट्रेशन या रिपीटिशन लॉजिक. ओके, these all are control structures to control the flow of program. So all programming language has control structures, but their syntax is different. But syntax is different, isn't right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what is sequence or sequential flow logic? So as we know that its name, program or algorithm executed line by line from top to bottom that execute all statements refers to sequential flow. Anybody, can we give the example how sequential logic executed? ना है खबर? मैम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेको बस प्रोग्राम असां ठाहींदा आहियूं तो सीक्वेंशियल मूंखे सिंटेक्स, कंपाइल. हाँ मूंखे ॿुधायो, सिंटेक्स ॿुधायो कि सीक्वेंस या सीक्वेंशियल लॉजिक में कहिड़ियूं स्टेटमेंट्स यूज़ थींदियूं आहिनि? स्विचिंग पढ़ी अथव? कहिड़ियूं कहिड़ियूं हूंदियूं अथव? हलो वापसि अचो हिते. सीक्वेंस ऐं कंडीशनल आइट्रेशन. आइट्रेशन में कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि? हेठां खां टॉप खां वञूं था. मैम लूप्स. लूप्स आहिनि, लूप्स आहिनि, पर फार लूप आहे, वाइल लूप आहे, डू वाइल लूप आहे. ओके, मां सही लूप आहे. ये में हा, कंडीशन में अची वञूं त असांजे कंडीशन में छा थो अची वञे? इफ एंड एल्स एंड सिलेक्शन लॉजिक. इफ एंड एल्स ऐं ॿियो कंडीशन में स्विचिंग अची थी वञे. ठीकु आहे. लेकिन सीक्वेंस में कहिड़ी अचे थी? तव्हां केसिस न आहे पढ़िया प्रोग्रामिंग में? यस मैम पढ़िया आहिनि त हे सीक्वेंस लॉजिक cases refers to cases na. Got it? So sequential logic refers to cases, conditional logic refers to related with conditions, if else or switching, and iteration refers to related with loops such as for loop, while loop, do while loop. Got it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now moving to the detailed discussion of this topic. A sequence instruction, a program
Our algorithm executed line by line from top to bottom and execute all the statements. So cases में क्या होता है, सब statement executed थींदियूं आहिनि. Got it? So if we designed any program by using sequence instruction, you can done it. You can. Yes, ma'am. Okay. Then conditional logic or sequence selection logic. In this logic, execution of a program or algorithm alternatively based means it is works on the basis of alternative, single alternative, double alternative, and multiple alternative. Single alternative means only if a statement is used. Double alternative means if else use, and multiple alternative means if else if use. Got it? It is very clear that how selection Yes, ma'am. logic works. Then iteration logic. Iteration logic is also called repetitive logic or repetition logic. In this, repeat the statement, it is followed by module or involved in loop structure. So there are three type of loop structures: for loop, while loop, and do while loop. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, clear. It's very clear that you can easily design create a program by using iteration logic. Clear? मैम Yes. मैम सीक्वेंशियल आरे में चई पियो त उन में स्टेप बाय स्टेप जेको आहे उनखे एग्जीक्यूट कंदो आहे हर स्टेटमेंट खे, पर मैम केस में त जेका कंडीशन असां ॾींदा आहियूं त उहो केस वारी उहा स्टेटमेंट प्रिंट कंदो आहे. केसेस में सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट थींदियूं आहिनि बेटा. केसेस में छा हूंदो आहे, जेके बि केस मैच थींदो उहा एग्जीक्यूट थींदी, लेकिन उन सां गॾु रिलेटेड जेके बि केसेस असां ॿुधाईंदासीं सभु एग्जीक्यूट थींदा. तव्हां बुक खणो, बुक नंबर बुक आहे तव्हां वटि लेटर सी, बेस्ट बुक आहे. लेटर सी में तव्हांखे ॾाढो क्लियरली केसेस ॿुधायल आहे, जंहिंमें इहे शयूं क्लियरली Yes, ॿुधायल ma'am. आहे. ठीकु आहे. मैम के Okay, स्विच में असां जो स्टेटमेंट सभई रन थींदियूं आहिनि, पर असां ब्रेक लॻाईंदा आहियूं, जीअं जेको ट्रू थिए उन खां बाद में ॿियूं न अचनि. New topic is complexity of the algorithm. So we already discussed that what is the complexity of the algorithm. Complexity of the algorithm is a function. Complexity of the algorithm is a function which refers to the find out the algorithm's complexity. So we have find out the complexity of the algorithm for the linear search on the behalf of its time, that we have found its worst case, average case, and best case. So first of all, how to check which case will be applied in linear search? That mostly the worst case, because if we choose the linear search, then for the finding of any element from the item, then we must find or visit whole array throughout this. So we have need n number of times for the finding the item from the given array. That is why linear search always has n number of complexity. So जो complexity of formula थींदो n is equal to n. कंहिंजे लाइ? linear search जे लाइ. अगर item will be found in the last step and the last of the array in the location last, then it goes to the worst case. If item will be found in the mid of the array, then it goes through average case. If item found in the first place of the array या पहिरीं पोजीशन ते ही मिली वञे, लोकेशन ते मिली वञे त बेस्ट केस आहे. अगर मिड में मिले त एवरेज केस आहे. अगर आखिर में मिले त वर्स्ट केस आहे. So got it?